वेब एप्लिकेशन आम डिजाइन करवा तो फास्ट पार्ट हूँ आम पढ़ा मॉडल व्यू कंट्रोलर मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर ये तीन टा जिनस आम पढ़ा वेब आर्किटेक्चर रे आम तीन टा यूज करवा मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। अच्छा व्यू माने कौन आम जो HTML जो पेजेस गुड़ाक डिजाइन करुचे ताको कह व्यू। हाँ ताको कह व्यू। आम जो डेटा गुड़ाक दौचे माने HTML रे जो इनफॉरमेशन गुड़ाक पास करुचे सेटा हूँ आमर कंट्रोलर। जमती देख आम जो एप्लिकेशन बनइबा ये देख तीन टा जिनस अच्छी गोटे हूँ प्रेजेंटेशन। Presentation it is the topmost layer in the web application architecture. This layer provide a user interface that allow the user to interact and communicate with the application. Business logic it is the middle tier in the web application architecture. It contains the logic related to the business decision of the organization. Next is data access. It is the last tier of the web application architecture. It contains the logic that enable you access the store various data sources. माने जोठी कि हमर डेटा गुडा को स्टोर होबो। अच्छा ये जो डेटा गुडा को हमें स्टोर करबा एटा में RDBMS थ्रू रे डाटा को रिट्राइव करबा। तो मन रखो जे कोनोसी एप्लिकेशन हमें आज का टाइम रे यूज करछे एज अ फुल स्टैक डेवलपर बा तुमे जते बेले काम करिवो तुमरो प्रोजेक्ट रे तमे तीनटा जिंस पाइबो। गोटा होची HTML और जावास्क्रिप्ट को यूज करके तमे एप्लिकेशन गुडा को डिजाइन करिवो एप्लिकेशन डिजाइन करिवो। तापर तुमे बिजनेस लॉजिक लिखिवो। बिजनेस लॉजिक रे कोन होबो ना हमें जो डेटा दौचे ताको हमें वैलिडेशन करवा बिजनेस लॉजिक रे। डेटा एक्सेस लॉजिक रे कहबा हम डेटा को लेके परमानेंटली डेटाबेस रे स्टोर करबा। तो एई तीनटा जिंस हमर एप्लिकेशन बनाया पई वेब एप्लिकेशन आर्किटेक्चर बनाया पई दरकार पड़े। बुझी पाइलो ए तीनटा जिंस स्मृति अलिवा? यस सर। Yes, sir. ओके एटा तुमरा एबे एई जिंसटा पढ़ा होथिबो। ओके तो यही तीन टा जिनस को लेकिन आमे हमरो जो वेब एप्लिकेशन आर्किटेक्चर अच्छे एटा तीन प्रकार आर्किटेक्चर अच्छे। गोटे हूँ सिंगल टायर आर्किटेक्चर, गोटे हूँ टू टायर आर्किटेक्चर, गोटे हूँ थ्री टायर और एन टायर आर्किटेक्चर। सो हमारे तीन टा आर्किटेक्चर अच्छे। गोटे सिंगल टायर आर्किटेक्चर, टू टायर आर्किटेक्चर, देन थ्री टायर आर्किटेक्चर। सिंगल टायर आर्किटेक्चर इज also known as monolithic architecture. In this architecture the presentation logic, business logic and data access logic are packaged in a same computer. माने हमरो जो रहला प्रेजेंटेशन, बिजनेस लॉजिक एंड डेटा एक्सेस ये रहला गोटे सिंगल सिस्टम रे रहइबो। माने आमे जदि प्रेजेंटेशन, बिजनेस लॉजिक, डेटा एक्सेस लॉजिक को नै के एप्लीकेशन बनैबा गोटे सिस्टम पा ही हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल माने इंस्टॉल करबा। माने सेठी इंस्टॉल होबो सेठी यूज होबो अलगा कोनोसी जगह रे यूज करी होबो नै। एटा होची सिंगल टायर आर्किटेक्चर। तापरे हमर रहला सिंगल टायर आर्किटेक्चर रे कोन रहइबो प्रेजेंटेशन लॉजिक रहइबो, बिजनेस लॉजिक रहइबो, तापरे डेटा एक्सेस लॉजिक रहइबो। ओके तले एई आर्किटेक्चर नै कि हमें जे कोनोसी सॉफ्टवेयर बनैबा ताले से सब सॉफ्टवेयर गुडा को हमको गोटे मशीन रे इंस्टॉलेशन करियो को पड़िबो। इट इज इंस्टॉल इन ओनली वन मशीन। ओके गोटे मशीन रे एटा इंस्टॉलेशन होबो। टू टायर आर्किटेक्चर रे कोन होबो ना इन दिस आर्किटेक्चर the presentation logic resides in the client. Presentation logic टा कोडी रहइबो ना client रे रहइबो। आ रहइला business logic reside in the client or server। अच्छा देखो एठी रहइला टू टायर आर्किटेक्चर कोन रहइबो ना हमरो presentation logic and business logic। presentation logic टा सबले client रे रहे, data access logic टा सबले रहइबो server रे। आ गोटे रहइला business logic। business logic टा जते client रे रहइबो ताको हमें कहिबा फैट क्लाइंट। माने क्लाइंट माने फैट है जीवो। तो ए सेक्टर रे कोन हो मन रख हमें जतले कोडिंग टा जावा स्क्रिप्टिंग यूज करके जदि बेसी वैलिडेशन दबा ताले जतले हमर वेबसाइट टा को प्रोसेस करिवा वेबसाइट रो लोडिंग टा अधिक है जीवो। ताले हमें जतले गोटे वेबसाइट देखि दिबो हमें जतले खोलिबा सेटा टाइम निये लोड होवा पय। एटा कोन पय टाइम निये ना जेहेतु बिजनेस लॉजिक टा हमर क्लाइंट रे थाए। तापर रहला कोन ना जदि बिजनेस लॉजिक टा मो डेटाबेस बा सर्वर को पठे देबी ताले कोन होबो एटा हे जीवो मोर फैट क्लाइंट। फैट क्लाइंट हेले मोर प्रोसेसिंग टा बहुत फास्ट रहइबो। तो एठी देखो डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस लॉजिक ओके हमर डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस रिक्वायरमेंट द टू टायर आर्किटेक्चर कैन बी of the following type. One is a client
fat client thin server, another is fat server and thin client. हमर दीटा रहइबो गोटे होची fat client thin server, आउट रहइबो fat server and thin client. ए दीटा भीतर गोटे रहइबो. अच्छा fat client thin server का कहइबा. In this type of presentation logic, the business logic reside in the client. Business logic ta client रहइबो and data access logic reside in the server. Data access logic ta server re रहइबो. Such application architecture helps in reducing the load on the server. ए application में कहाँ होगा server load टा हमारा reduce हो जाएगा because the server only store the data and doesn't participate in the business logic processing which is done on the client. However, this makes client heavy. जितने client टा heavy होगा server टा हमको response दे देगा शीघ्र किंतु client टा जितने बड़े हमारा heavy होगा हमारा information टा load होगा पाए client machine ने प्रथम तरह जितना load होगा इटा बहुत time ना होगा. This type of application architecture is generally used in the organization that either cannot afford reliable network infrastructure or have small user base. जो जगह रे कम user अचंती से जगह रे हमें fat client thin server use करी परिवा. But जो टी client अधिका अचंती Facebook कथा नहीं नियो सेठी हमें fat client thin server architecture use करी परिवा. इटा important बढ़िया एजेंसी रा मन रखियो. कोठी हमें fat client thin server use होगा जो टी number of user कम थीवो. तुमको जेते डेटा एनालिसिस करिया पई दिया जीवो कंपनी रे से तुमको पचारिबे को आर्किटेक्चर रे बनेबो तमे फर्स्ट एनालाइज करिवो कस्टमर केते जण अछथि जदि हमर ह्यूज रिक्वायरमेंट रहउची त से जगह में फैट क्लाइंट और थिन सर्वर यूज करि परिबा नाही. And now what happened? Fat server thin client. In this type of client contain only presentation logic, the business logic and data access logic reside in the server. Such architecture is easily managed and less prone to security risks and offer low maintenance and licensing cost. This is because it is easy to manage a single server instead of managing client computer. Similarly, securing and maintaining a single computer is easier than managing several computers. मु जदि सर्वर रे गोटे इन्फॉर्मेशन रखी देबी माने मु सर्वर टा को खाली मैनेज करबी क्लाइंट रे जदि मु बिजनेस लॉजिक लिखुची ताले सबु जाक क्लाइंट को मते मैनेज करिया को पड़ियो तो हमर सबुटर बढ़िया उपाय कोन रहउची सर्वर रे लोड कर दियो मु गोटे मशीन को केवल लुक आफ्टर करबी आ अन्य गुडा को मते न देखले भी चलिबो. In this type of architecture is primarily used in the organization where the business are managerial operation that need to be performed are complex and large in the number of users who require access the server in high number. जो जगह रे हमारा high number of user अछंती से जगह रे हमारा इटा fat server टा हमारा use होगा. This is because in the fat server the client application architecture all the business logic reside in the server. Therefore, the processing is done on the server. This save the cost as money on the server needs to be have high hardware configuration. The clients do not require any high configuration and even dumb computer. Okay, so in this architecture is less prone to the security risks because security is require only the server. तो एठी मु सर्वर रे केवल गोटे दरा एंटीवायरस तो यूज करछि सर्वर रे खाली सिक्योरिटी दे दउछि ताले मोर आउ किछ असुविधा नै एठी मते ईच क्लाइंट रे मते सिक्योरिटी दबा को पड़ियो. So that is the main problem. Okay, so here presentation logic, here thin client and fat server is present. बुझियला ए पार्ट? Yes, sir. But एठी भी गोटे प्रॉब्लम अछि कोन however with the increasing in number of client the performance of the fat server and thin client application architecture is deteriorate. जेतबे number of user अधिका हे जिवे ताले कहबो ना सर्वर को अधिक लोड परिबो. This is because the server may become overload when there is substantial increase in number of requests received. To achieve the scalability and robustness, the application related logic was further segregated in the three tier architecture. सेति कोन होला ना ए जो लोड टा को कमे पई हमें यूज करले थ्री टायर आर्किटेक्चर. थ्री टायर और एन टायर आर्किटेक्चर से थ्री टायर एन टायर आर्किटेक्चर कोन होबो ना बिजनेस लॉजिक डेटा एक्सेस लॉजिक आर सेपरेटेड इनटू द डिफरेंट लेयर. माने क्लाइंट प्रेजेंटेशन रहइबो क्लाइंट बिजनेस लॉजिक रे रहइबो बिजनेस लॉजिक टा कोठी रहइबो ना एप्लीकेशन वेब सर्वर रे रहइबो डेटाबेस पे डेटाबेस सर्वर रहइबो. सो तीनटा जको पार्ट अलग रहि गला. तेनु एठी कोन होबो ना बेसिकली जो वेबसाइट एप्लीकेशन हमें बनाउचे ए थ्री टायर आर्किटेक्चर बनाउचे सो दैट हमर एठी फर्स्ट रहउचे किंतु एथि पई मते दीटा सर्वर
को किनिबा को पड़िबो दीटा सर्वर जदि किनिबा हमर कॉस्ट भी सेमते अधिक हो तो जो क्लाइंट माने सेम एप्लीकेशन रहइबो किंतु जो क्लाइंट जते पैसा दबो से अनुसार हमें सर्वर चूज करिबा हमर जो भारत मैट्रिमोनी जो बळे साइड होची से बळे हमें गोटे साइड बनै परिबा किंतु भारत मैट्रिमोनी जते इन्वेस्टमेंट करिछि गोटे गोटे छोटिया लोकल कंपनी आसी कहबो नै मो पे बनाओ से जदि एई 3 टायर आर्किटेक्चर चूज न करूछि तार प्रोसेसिंग पावर स्लो रहइबो तार यूजर एते नथिबे जेतो भारत मैट्रिमोनी रो अधिका यूजर अछंती तनो सेठी कोन हबो ना से अधिका लोक पई समस्त को सेग्रीगेट अलग अलग कर देला so in the 3 tier architecture every tier has its own set of processing power to service client request this helps in disturbing the user request load resulting the high performance and scalability if the application related logic is segregated into more than 3 tier it is termed as the entire architecture a web application may follow only one preceding mentioned application architecture depending upon the requirement and complexity of the application तो आपको बेस करके हमर आसिला मॉडल व्यू कंट्रोलर ओके मॉडल व्यू कंट्रोलर मॉडल रे कोन रहइबो व्यू रे कोन रहइबो व्यू रे हमर रहइबो एचटीएमएल माने हमें डिजाइनिंग करबा व्यू रे हमर कंट्रोलर रे कोन रहइबो कंट्रोलर रहइबो हम बिजनेस लॉजिक बा जावा रा प्रोग्राम रहइबो हमें जहा यूजर इंटरफेस रे डाटा दबा सेटा कंट्रोलर रे वैलिडेट होबो तापर वैलिडेट हैला पर कोडी स्टोर होबो ना डाटा जति मोर करेक्ट अछि से गोटे क्लास फाइल स्टोर होबो सेटा हैला मॉडल से क्लास फाइल डाटा आने के हमें नेकी डेटाबेस से स्टोर कर पाएगा तो आवर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर हैविंग 3 पार्ट वन इज मॉडल व्यू कंट्रोलर तो हमें जो भी वेब एप्लीकेशन आज बनाउचे सेटा होची एमबीसी आर्किटेक्चर को नेकी बनाउची एमबीसी एम फॉर मॉडल वी फॉर व्यू सी फॉर कंट्रोलर व्यू रे हमें डेटा दबा कंट्रोल रे हम डेटाटा प्रोसेसिंग हबो डेटाबेस रे मोर डेटाटा स्टोर हबो बुझियला अलीवा Yes, sir. Yes, sir. ओके तो एटा एते पढ़थावा जी हला हमें मॉडल व्यू कंट्रोलर जोटा अछि एटा को नोट्स टाकिबे आ आर नोट टा भी तुमको पठेबे हला तो नेक्स्ट क्लास रे एटा देखिबा ओके